Yes, good evening, everyone. Yeah, good evening, everyone. Yes, so I hope the audio, video, everything is fine today. Yeah, just give me a thumbs up, everyone. Yeah, good evening, Sonu, Shiv, Jayashri, Omkar, Sarishta, Nitika. Good evening. Good evening, guys. Welcome to the session on GIT, gut embryology. Gut embryology, and today I will be starting with the embryology part one, that is the development of the foregut. Yeah, so just give me a thumbs up, guys, in the chat box that everything is fine from my end. Like audio visuals are everything like going good. Yes, I'm waiting for your thumbs up. Yes, Rutuja Patil says yes, sir. It's all good. Good evening. Good evening, Aditya. Welcome to the session on gut embryology. Yes, I will be discussing the system in such a way, guys. It's like a very beautiful concept that whatever like the system is, for example, this is the GIT system which I will be discussing. I will be discussing the embryology part first. I will be discussing the diseases which are, I mean, the clinical correlations here in the embryology only, the surgical clinical correlations, okay, embryological correlations over here only, okay. Beyond that, after that, I will be discussing the anatomy part, then the physiology part, then the pathology and pharma relevantly. So it will be like a very yes, good evening, everyone. Yes, I hope everyone is ready, and just let's start with the session now. Let's start with the session. So, the very first thing that we have to study in the GIT or the gut embryology, guys, remember it is the folding of the embryo. Folding of the embryo. Now, before coming on to the folding of the embryo, now, guys, we have done up till the third week. If you have seen my previous lectures, guys, so if anyone is new, I would just recommend him to go through the previous lectures also, which I have already discussed on this channel as well. Okay, so yes. So what happens? You already know, guys, that yes, by the end of the third week, you already know that by the end of the third week, okay, specifically by the end of the third week, guys. Now, embryo, if we talk about the embryo, guys, it is in the form of embryo is in form of trilaminar germ disc. Trilaminar germ disc. Now, when I say trilaminar, guys, you already know that it is now composed of all the three layers, the definitive ectoderm, the definitive endoderm, and the definitive mesoderm. Okay. Now, guys, in the chat box, just tell me which is the first layer to be formed. And after that, which layer is formed, and at last, which layer is formed. Just type it in the chat box so that I'm also aware of the fact that you guys are revising the notes constantly. Right? So, yes. Good evening, Tanupriya. Welcome to the session. So, trilaminar germ disc is formed. Okay, and so I can just compare it with two slices of bread with butter in it, or I can say jam in it. So basically, we have ectoderm, endoderm, and in between we have mesoderm. We have mesoderm. Yes, Anushka, it is endo, meso, and ecto. Very good, Anushka. The fastest answer given by Anushka, Aditya, Garima, Fanmode, Rutuja, Omkar, Nikinder, Kriti. Very good, guys. Nitika, very good, perfect, beta. I think everyone is revising. So we already know the trilaminar germ disc. It is composed of the endoderm, right? Then we have the formation of the mesoderm, the latest update, and after that it is the ectoderm which is formed. So in order, first endoderm, second mesoderm, and third is the ectoderm. Now entire embryo is like in the form of a sphere. Now what I'm doing, guys, I'm going to take a sagittal section. Okay, I'm going to take a sagittal section, and everyone knows what is a sagittal section, guys. Everyone knows what is a sagittal section. You already know. I'm just cutting the body from this, and I'm looking the body from this side, right? मैंने अपने body को just have cut like this, and I'm just watching the body from this particular side. This is called as the sagittal section, right? And that I will show you right now over here. Okay.
So remember guys, remember this particular diagram is very, very important. This diagram is important. So yes, you already know. Yes. First, just see the diagram, guys. It's very important to just see the diagram. First, I'm just drawing a very simple diagram so that everything is like pretty clear to everyone. What we have discussed, I'm just going to draw that only. Nothing. Yes. Now, everyone knows that this wala cavity, it will be the amniotic cavity, right? This is the amniotic cavity, right? And this is the yolk sac. And can anyone tell me which yolk sac is this? Which yolk sac is this? Okay, anyone in the chat box would like to tell me which yolk sac I have drawn right now? Yeah. Now, guys, in between the amniotic cavity, you already know that this layer, it is the endodermal layer, right? It is the endodermal layer. The above layer, okay, I'll just draw it. Then I will add the things. So just yeah, yes. Is it the primary one, Anushka? No. After the three germ layers are formed, which yolk sac it will be? Yes, Jayashri Tanupriya, very good, very good. It is the secondary yolk sac. I've already told you, secondary yolk sac. So we have the ectodermal layer. Okay, we have the ectoderm. Okay, we already know we have the endoderm over here. And in between the ectoderm and the endoderm, we have the proliferating mesoderm. Yes, Sonu, very good. Jinal, Harshit, Tanvi, very good. Very good, beta. Now, guys, remember that in between the amniotic cavity, okay, or between the two layers, the ectoderm and the endoderm, okay, we have this particular mesoderm over here. We have this mesoderm. So yes, I'll just mark it, guys. So this is the mesoderm, right? This is the mesoderm. I've already shown you also. In the mesoderm, we already know we have something which is called as the neural tube. Okay. Below the neural tube, we have the notochord, and at the sides of the neural tube, we have the neural crescents, right? At the sides of the neural tube, we have the neural crescents. So this is actually the okay, I can just mention it over here. You already know, by the way, this is the neural tube. Okay, और नीचे जो dot बनाया हुआ है, you should be aware that it is the notochord. It is the notochord. It is the notochord, right? Now, what is there, guys? There is a structure over here. Now, we already know that this end, I have already told you, ये वाला जो end था, that was the procaudal plate earlier, right? So I have already decided that this is the head end of the embryo. Okay, this is the head end of the embryo, or I can say this is the cranial end of the embryo, or this is the cranial end of the embryo, and the corresponding respective part, this will be the tail end, or it will be the caudal end of the embryo. It will be the caudal end of the embryo, right? This will be the caudal end of the embryo. Now, guys, you are very well aware that the cranial end, okay, towards the cranial end, we have a structure, okay, we have a structure over here that is called as, in this particular mesoderm, that is called as septum transversum. Okay, it is also developing. This structure we will discuss in detail. No need to worry. Just you have to write down right now. This is the septum transversum. Now, this particular structure is actually developing. Okay, the major part. Okay, major part which is developing the diaphragm. Okay, it is the major part which is developing the diaphragm. So this is septum transversum. Okay, now again
At 2 points, guys, I have already told you, right? Okay, at 2 points, okay, at the cranial region, guys, you will see a cavity over here. Okay, a cranial region. Towards the cranial region, a cavity will be formed, beta, and this cavity is called as the pericardial cavity. Okay, it is the pericardial cavity. It is the pericardial cavity in which the heart is developing. In which the heart is developing. It is the pericardial cavity in which the heart is developing. Okay, and just below it or beyond it, you guys will find that there is a structure that I have already told you before also, that this is the point where the mesoderm will be absent. And can you tell me the name of this particular structure where the ectoderm and the endoderm are meeting, but there is no mesoderm in between? Can you tell me the name of the structure, guys? मैंने बताया था दो एंड पे पॉइंट्स ऐसे होते हैं वेयर द यस इट इज द बक्कोफेरेंशियल मेम्ब्रेन. यस, फन मोड, इट्स राइट, वेरी गुड. दो एंड्स होते हैं जहां पे जो ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म है. अब ये मीसोडर्म एम्ब्रियो के अंदर बन रहा है, तो बेटा ये बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दिस इज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म. इट इज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, राइट. एंड हाँ, तो ये बक्कोफेरेंशियल मेम्ब्रेन हो गया ना, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था मीसोडर्म एब्सेंट है. तो दिस इज द बक्कोफेरेंशियल मेम्ब्रेन वेयर द मीसोडर्म विल बी एब्सेंट. चल, बक्कोफेरेंशियल मेम्ब्रेन, ओके. और यही रप्चर होके बाद में क्या बन जाता है? ओपनिंग फॉर द माउथ. यही बाद में चल के क्या बन जाएगा? ओपनिंग फॉर द माउथ, राइट. नाउ टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड, गाइस, टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड, अगेन आप लोगों को पता है टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड देयर विल बी अ स्ट्रक्चर, okay, where this mesoderm will be absent. Now can you tell me towards the structure, which structure will it be? Which structure will it be where the mesoderm is absent over here? चलिए बताइए. towards the caudal end, towards the caudal end, yes. टुवर्ड्स द कॉर्डल एंड. बताओ बेटा ये कौन सा वाला वो है? यस, क्लोइकल मेम्ब्रेन, तनुप्रिया, वेरी गुड. सो दिस इज like I just want to show it. It is the cloacal membrane. Cloacal membrane. Cloacal membrane. तो ऑब्वियसली बात है कि जो टेल एंड वाला पार्ट है या कॉर्डल एंड वाला जो पार्ट है, सो ये तो जो एनस की ओपनिंग बनेगी, दैट विल बी ड्यू टू दिस ओनली. दैट विल बी ड्यू टू दिस ओनली. यस, तो ये चीजें सबको क्लियर हो गई है. क्लोइकल मेम्ब्रेन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया है. अब इसमें आप लोगों को याद रखना है, already I have, like, I hope you all have drawn the diagram, so I will just remove it to show you something, guys, over here, right? I will remove it to show you guys something. So we already know we have a structure, okay, that is holding this particular embryo. So yes, I will just show it from here only. Yeah, if you have just drawn the diagram, because I have to label it and I have to just show it, guys. So there is something which is called as the connecting stalk. Okay, this is something which is called as the connecting stalk. Now you already know connecting stalk is actually holding the embryo. Okay, it is the future umbilical cord, right? It is the future umbilical cord. And remember, when the three germ layers are formed, a small portion of the yolk sac will get into this connecting stalk, a small projection of this yolk sac, okay, and this is called as the allantois, and this is called as the allantois. It is the projection of the yolk sac, okay, it is the projection of yolk sac into the it is the projection of yolk sac into this connecting stalk, right? I hope this is clear up till now.
फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि ये थोड़ा सा डायग्राम जो मैंने बताया ये क्लियर हो गया, तो इसके बाद मैं फोल्डिंग समझा दो कि एक्चुअली होती क्या है फोल्डिंग। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया? यस, एलेंटोइस बोलते बेटा, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द yolk sac ओवर हियर। हाँ, यस, अनुष्का सेज यस इट इज क्लियर टू एवरीवन। या, वो लेबलिंग मैंने पहले कर दी थी तो आई जस्ट रिमूव्ड इट। यस, तनुप्रिया, कपिल, आदित्य, गरिमा, वेरी गुड गाइस। बाकी सब भी रिप्लाई करते रहो सो दैट इट्स। यस, सोनू, तन्वी, ओके। Now, guys, remember that we have the folding. Now, what is folding, guys? Now, remember that the folding, it is, okay, it is the process of transformation. It is the process of transformation of the early disc shaped structure. मैंने बताया था ना डिस्क शेप्ड होती है, early disc shaped structure, okay, into an embryo, okay, into an embryo. An embryo, basically it has a definite shape. It has a definite shape, right? And remember, this folding basically starts at the end of the third week. It starts at the end of the third week. It starts at the end of the third week. अब जो मैंने अभी आपको बताया था डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ओके, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर इज देयर, ओके, पेपर, एंड वो जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इट विल नाउ कवर इन, basically it will form an embryo, okay, and that embryo will have a definitive shape, and that embryo will have a definitive shape. Now how this embryo is actually like so remember guys that we have two types of folding, okay, there are two types of folding, okay. Now there are two types of folding, guys. So what I'm just trying to show you, there are two types of folding, okay. The folding that I'm showing you, it is called as yeah, it is called as the craniocaudal folding. Craniocaudal folding. अभी ये वाला डायग्राम हम लोगों ने बनाया था जो फोल्डिंग से पहले था। अब देखो बेटा क्या होता है, वी ऑलरेडी नो वी हैव दिस एमनियोटिक कैविटी, वी हैव द yolk sac, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन, दिस हेड पार्ट, दैट इज द क्रेनियल पार्ट ऑफ द एमनियोटिक कैविटी, लाइक ओके, टुवर्ड्स द हेड वाला पार्ट जो है, और ये जो कॉर्डल पार्ट है, this part will try to go okay, it will go in opposite directions like this, and it will not try to accumulate the yolk sac, okay. So amniotic cavity कहाँ जा रही है, basically from the sides it is going towards the yolk sac, ये बिल्कुल side से आ रहा है, ठीक है. So one from the cranial end and one from the caudal end, and they are just trying to cover the yolk sac. So they are just trying to cover the yolk sac. So if I just want to draw it, guys, if I just want to draw it, so remember guys that now let us draw that what will happen as a result of folding, right? What will happen as a result of folding? So yes, now this amniotic cavity, it is like the caudal part, it is coming and trying to grab the yolk sac. It is trying and coming to grab the yolk sac, right? Now what will happen? We already know inside we have this
yolk sac, and yolk sac I'm just drawing it with, yeah, red color. Okay, so we already know that it is the yolk sac. Okay, and we already know there was one projection of the yolk sac coming into the connecting stalk, right? And due to this folding, okay, due to this folding, just a, yeah, what will happen? A part of the yolk sac will come out. A part of the yolk sac will come out, and now the resulting yolk sac, okay, the resulting yolk sac that is outside this particular cavity, it is called as the vitilo-intestinal duct. Vitilo-intestinal duct. We already know this is the allantois part, right? This is the allantois that was earlier in the connecting stalk wala part, right? And the one which is coming down, yeah, it is the vitilo-intestinal duct. And obviously this is, these all are present in the connecting stalk. Yes, these all are present in the connecting stalk. Yes, these all are like present in the connecting stalk. Right. So this is the future umbilical cord or the connecting stalk, right? So it is, now I'm writing it as umbilical cord. Okay, I'm writing it as umbilical cord now. Now guys, due to result of the folding, due to result of the folding, you already know कि सबसे पहले क्या था, septum transversum था, ठीक है, first structure was this, second structure was this pericardial cavity, and third structure was this what we say, the buccopharyngeal membrane. So it will now, as a result of folding, as a result of this folding, okay, these structures will go like this. Now what will happen guys, tell me, the first structure, what it will be over here? Yes, this structure will be septum transversum. Okay, this structure will be septum transversum. Now this will be the pericardial cavity. I will tell you this is the pericardial cavity where the heart is developing. Okay, and the third structure guys, this membrane, yeah, this membrane will be the buccopharyngeal membrane. Buccopharyngeal membrane, and you guys already know that buccopharyngeal membrane will rupture. Okay, buccopharyngeal membrane will rupture, and through this the amniotic fluid will come. Amniotic fluid will come, and it will be an entry to the fetus, I mean to the developing embryo's mouth, and it will go inside the body. And obviously you know this particular membrane, okay, that is the cloacal membrane, and this membrane will also rupture. The amniotic fluid आएगा, it will pass into the fetus, and it will come through the anal canal जो बन जाता है. Okay, so I hope this picture is clear to everyone. This picture is clear to everyone. तो फोल्डिंग की वजह से ये चीज हो रही है. रिमेंबर गाइस, ये जो बाहर निकल गया है पार्ट ऑफ द yolk sac, it is the vitilo-intestinal duct. It is the vitilo-intestinal duct. Now it is the only duct which is called as the definitive yolk sac. डेफिनेटिव yolk sac. ये फोल्डिंग की वजह से क्या हुआ बेटा कि जो yolk sac था अंदर थोड़ा सा रहा और बाहर उसने प्रोजेक्शंस दे दिया है बहुत बड़ा सा. ठीक है, बिलीव मी गाइस, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, it will now form the gut, the GIT gut, and towards the head end we have the foregut, beach wala part we have the midcut, and towards the tail end it will form the hindgut. It will form the hindgut. Okay, so we have the foregut, okay, then we have the midcut, and subsequently we have the hindgut.
So if I ask you in the chat box, guys, try to answer the question that, okay, try to answer the question. Foregut, midcut, and hindcut. Okay, they all will be like for forming the entire organs. Okay, the esophagus, stomach, duodenum, jejunum, ileum, till okay the hindgut. They all are derived from which particular structure? They all are derived from which particular structure? चलिए आंसर दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में, तब तक मैं मार्क करूं कि अगर ये पूरा का पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड है, अगर ये पूरा का पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के कंटेंट्स देखने बहुत जरूरी है। यस, योक सैक से बना हुआ है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लो, योक सैक, अब इसका ओरिजिन बताओ, ये एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है या मेसोडर्म है? ये एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है या मेसोडर्मल है? जल्दी से बताओ। तो एवरीवन इज राइट। यस, तन्वी, सोनू, गरिमा, आदित्य, तनु, जीनल, अनुष्का, एवरीवन इज राइट। अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो योग सैक है, ये एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है या मेसोडर्मल है? आंसर्स देते रहो। तो बेटा, meanwhile you are giving the answers, I'm just writing this umbilical cord के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, what are the contents over here which you can find in the umbilical cord, right, which you can find in the umbilical cord. Meanwhile you should know that this is the pericardial cavity in which the heart is developing. Pericardial cavity. Yes, guys, everyone is right. I just forgot to see the answers. Anushka, Tanvi, Sonu, Garima, Nikinder, Aditya, Tanu, Dimple, Kriti, Funmode, Jinal, everyone is right. Yes. तो अब मैं आपसे पूछूं कि स्टमक किससे बना हुआ है? व्हाट इज द बेसिकली स्टमक की वो क्या कहते हैं, लाइनिंग क्या है? तो ऑब्वियसली इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं पूछूं ड्यूडेनम की क्या है, तो इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, आई होप ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया है, सब लोगों को अभी तक ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सब लोगों को। जो योग सैक बेटा बाहर की तरफ निकल आया है उसको डेफिनेटिव योग सैक बोलेंगे, क्योंकि अंदर वाला जो है वो पूरा का पूरा क्या बनाएगा? गट बनाएगा, गट। ओके, द फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, राइट। तो ये वाला पार्ट तो आपको पता होना चाहिए, इट इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम, जिससे पूरा का पूरा, इससे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम से। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो नो नीड टू लाइक वरी। और ये वाला मेम्ब्रेन वाला पार्ट तो मैंने बता ही दिया है तुम लोगों को, ठीक है। अब कंटेंट्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड में दो कंटेंट्स के नाम तो फटाफट से दिख ही रहे हैं मुझे, तुम लोगों को पता है। वी हैव द एलेंटोइस ओवर हियर। एलेंटोइस तो पहले ही निकल गया था उसके अंदर से, ठीक है, yolk sac से। इट इज ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ द yolk sac टुवर्ड्स द क्या कहते हैं, हाइंड गट, राइट। हाइंड गट के नीचे वाला प्रोजेक्शन देखो, एलेंटोइस हो क्या। फिर हमारा क्या है, विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट, विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, हाँ, तीसरी चीज आप लोगों को याद रखनी है। यस, वी हैव, ओके, हाउ मेनी आर्टरीज आर देयर? वी हैव द टू umbilical arteries, two umbilical artery, okay, and लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। राइट अम्बिलिकल वेन बेटा डिसअपियर हो जाती है जब हम कार्डिक पढ़ेंगे, तो वी विल लर्न अबाउट दिस। और इसको याद करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इज लेफ्ट बिहाइंड, के लेफ्ट अम्बिलिकल वेन पीछे ही रह जाती है, ठीक है। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इज लेफ्ट बिहाइंड, राइट, राइट, ओके, ओके गाइस, so I hope this is also clear up till now, right? क्लियर है सब लोगों को? या टू आर्टरीज एंड वन वेन। तो फटाफट से ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में कि ये डायग्राम इतना तो समझ में आ गया है। तो फिर अब हम लोग देखेंगे फोरगट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से वो डेवलप कर रहा है, कौन कौन से ऑर्गन कैसे कैसे बन रहे हैं। विल जस्ट ट्राई टू लर्न इट।
यस, चलो, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। अब मैं तुमसे बोलूं कि विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट जो है, बेसिकली ये जो अपर पार्ट है ना योग सैक का, ये गट ट्यूब में एंड बेसिकली इट्स अ कनेक्टिंग duct, okay, connecting tube between the upper part and the lower part, right? Okay. चलो, वेरी गुड। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि ये जो एलेंटोइस है, इफ आई जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एलेंटोइस नाउ, चलो थोड़ा सा एलेंटोइस को भी देख लेते हैं। अगर ये एलेंटोइस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यू आर वेरी वेल अवेयर कि ये एलेंटोइस है, ठीक है, और एलेंटोइस इज एक्चुअली डिवाइडिंग द हिंड गट इनटू टू पार्ट्स। Okay, it is dividing this particular hindgut into two parts. ठीक है, एक होता है प्री एलेंटोइक पार्ट और एक होता है पोस्ट एलेंटोइक पार्ट। ठीक है, अब इसमें तो वो नहीं है तो या देखो, एक एलेंटोइस वाला पार्ट है, ठीक है, और एक एलेंटोइस के पीछे वाला पार्ट, ठीक है, द पार्ट ऑफ द हिंडगट विच इज प्रेजेंट अलोंग विद द एलेंटोइस, और एक एलेंटोइस के पीछे वाला पार्ट है, दैट इज द पोस्ट एलेंटोइक पार्ट, राइट। सो यस, तो ये हिंडगट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी उतना वो करने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन जस्ट मेंशन इट ओवर हियर कि इट इज डिवाइडिंग द हिंडगट इनटू प्री एलेंटोइक पार्ट, pre-allantoic part, and we have the post-allantoic part. Post-allantoic part, right? Pre-allantoic part and the post-allantoic part. So again, we'll discuss this in details. So there is no need to worry about this, right? चल, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, एंड दैट इज द या डेरिवेटिव ऑफ द फोर गट्स। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फोर गट, या derivative of the foregut. Now guys, you already know, now this is the developing embryo guys। तो ये तो आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट है, दैट इज द हेड पार्ट, राइट। ये हेड वाला पार्ट हो गया, ये टेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम वाला पार्ट है। एक्चुअली आई शुड नॉट मार्क इट इन साइड, या ये हेड पार्ट है और हम लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, साइड से देख रहे हैं, ठीक है, सेजाइटल सेक्शन देख रहे हैं बेटा। अब हम लोग सेजाइटल सेक्शन में इस वाले डक्ट का नाम बताओ जो मैंने ए से मार्क किया है। फटाफट से ए से जो मैंने मार्क किया है, फटाफट से लेबलिंग्स बता दो जल्दी से। ए से जो मैंने मार्क किया है जल्दी से उसका नाम बता दो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट आई हैव मार्क्ड विद बी? व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट आई हैव मार्क्ड विद बी? राइट, नाउ वी ऑलरेडी नो, यस, वी ऑलरेडी नो दैट this particular structure it is called as the aorta, aorta। और इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा, क्योंकि ये सबको पता है कि द एब्डोमिनल आयोटा इज द वन which will supply the entire gut, right। एब्डोमिनल आयोटा कहां से आया, तो ये स्ट्रक्चर तो सबको पता होना चाहिए बेटा। ones who are like new over here, you should know, okay। यस, ये तो आयोटा हो गया, तुमने ए वाला नहीं बताया। इट इज द विट्रो इंटेस्टिनल डक्ट, इट इज द विट्रो इंटेस्टिनल डक्ट, राइट। So you already know that we have foregut. You have to draw the system along with me. I will just try to make this diagram more simpler. Okay. Then we have the midcut. Okay. Then we have the midcut. And at last we have the hindcut. Now,
अभी पार्ट्स भी देखेंगे कि फोरगट में क्या पार्ट्स होते हैं। या बी इज द एलेंटोइक वाला पार्ट है। यस, एवरीवन इज राइट। पता नहीं, या तो मुझे अपडेट लेट मिल रहा है, बट आप लोग टाइप करते रहा करो, ठीक है। So remember guys that we already know there is something, a structure which is called as, yeah, this is the structure which is called as the dorsal iota. Okay, dorsal iota. Now iota, you already know बेटा, बेसिक्स थोड़े से आप लोग को पॉलिश करवा देता हूँ जल्दी से। देखो यहाँ पे यू ऑलरेडी नो कि हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम के नीचे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, आयोटा। ओके, यही आयोटा जो नीचे जाती है, ठीक है, इफ इट क्रॉसेस द लेवल ऑफ, देखो डायफ्राम तक इसको क्या बोलते हैं, थोरैसिक आयोटा, थोरैसिक आयोटा। और डायफ्राम से नीचे जैसे ही स्टमक रीजन में आ जाती है, एब्डोमिनल रीजन में आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल आयोटा। क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल आयोटा। सो वी हैव द डोर्सल एब्डोमिनल आयोटा, डोर्सल एब्डोमिनल आयोटा। तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट। आयोटा कम्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। आयोटा थोरैक्स रीजन में, डायफ्राम के ऊपर थोरैसिक आयोटा, डायफ्राम को पियर्स करती हुई, आयोटिक हाइएटस से पियर्स करती हुई नीचे जाती है, सप्लाइज द गट। सो इट इज कॉल्ड एज द, yeah, dorsal abdominal aorta, right, it is the dorsal abdominal aorta. So I'll just erase it, there's no need of this to like learn. तो ये तो बेसिक्स तो सबको पता ही है इतना तो, ठीक है। Now can anyone tell me which branch of the aorta will supply the foregut? Can anyone tell me which branch of the aorta will supply the foregut? Now this is the foregut. Which branch will supply the midcut? Okay, which branch will supply the midcut? And which branch will supply the hindcut? Which branch will supply the hindcut? So you already know we have the, yes. नहीं 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 नहीं, ये दूसरे का बोल रहे हो तुम अनुष्का, ये बेटा दूसरे वाले का बोल रही हो। दिस इज द फोर कट, मिड कट, एंड देन वी हैव द हाइंड कट। Artery supplying the foregut, it is the direct branch from the dorsal aorta. It is called as the celiac trunk. It is called as the celiac trunk. दूसरा, the artery supplying the midcut, it is the superior mesenteric artery. It is the superior mesenteric artery. And the artery supplying the hindgut, it is the inferior mesenteric artery. It is the inferior mesenteric artery. Okay, so the foregut, midcut, and hindgut, if I make a statement that they all three are divided due to the blood supply only, okay, ऐसा कोई specific नहीं है, just due to the division of the blood supply they are being classified. foregut को supply करती है celiac trunk, okay, midcut को superior mesenteric artery, hindgut को inferior mesenteric artery. Now when I talk about the parts of the foregut बेटा, parts of the foregut, और ये क्या है एक्चुअल में, गट ट्यूब है। ये जो मैंने अभी बताया था, दिस इज द गट ट्यूब, दिस इज द गट ट्यूब। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फोरगट, तो ये साथ में लिख लेना बेटा कि फोरगट basically what it will form, like, yeah, what the foregut will form later on, it is the floor of the mouth. Okay, it will form the floor of the mouth, it will form the tongue, okay, it will form the pharynx, it will form the palate, okay, it will form the submandibular and sublingual gland. Beta, parotid gland comes from the mesodermal part, right? So no need to write over here. Sorry, parotid comes from the ectodermal part. It is ectodermal in origin. We will discuss it later. Submandibular and sublingual glands, right?
Then we have the major part like esophagus, stomach, liver, proximal half of the duodenum, proximal half of duodenum, duodenum का एक छोटा सा part, right? Proximal half of the duodenum, extra hepatic biliary apparatus. Now, when I say extra hepatic biliary apparatus, guys, you should be aware of the fact that I'm talking about the gallbladder, the cystic duct. Okay, so this extra hepatic biliary apparatus and even the pancreas, they are all derived from the foregut. They are all derived from the foregut. They are all derived from the foregut. Now, when I say midgut, guys, when I say midgut, I'm writing it over here. Midcut. अब खुद ध्यान से देखो स्टमक के नीचे क्या आएगा ड्यूडेनम है ड्यूडेनम का proximal half it is formed by the foregut. Okay, so the left half, I mean the distal half of the duodenum, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम duodenum jejunum and ileum. So we have the distal half of the duodenum. Okay, then we have the jejunum, then ileum, okay, and we have the cecum and appendix. All they are derived from the midcut. All they are derived from the midcut. Now coming on to the, okay, yeah, one more thing. In midcut, you should remember we have ascending colon, okay, ascending colon, and we have transverse colon. Transverse colon and transverse colon only right 2/3. ठीक है, आप लोगों को पता है. देखो अगर ये कोलॉन बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रांसवर्स ये हो गया, तो ट्रांसवर्स का राइट 2/3 बेटा, राइट 2/3 it is derived from the midgut, or left 1/3 will be derived from the hindgut. So in the hindgut we should remember we have the left 1/3 transverse colon, left 1/3 transverse colon, उसके बाद डिसेंडिंग कोलॉन आ जाएगा, सिग्मोइड कोलॉन, रेक्टम, ये सब हाइंडगट से डिराइव होते हैं. So we have the left 1/3 transverse colon, we have the descending colon, okay, we have the descending colon, sigmoid colon, rectum, and the upper part of the anal canal, upper part of anal canal. So you should remember guys that hindgut से क्या क्या बनेगा, parts of the hindgut, right? Midgut से क्या क्या बनेगा, ठीक है, and foregut से what are the structures that will be like derived from. I hope this particular slide is clear to everyone. So we have just moved in order guys, और इसमें कुछ रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं, ऊपर से नीचे जो ऊपर वाला पार्ट जितना है, just remember कि foregut से midgut, okay, foregut to midgut. Now I just want to mention in this particular diagram guys, now see over here. Now foregut or midgut, foregut ends at, तो ये जो जंक्शन होता है, ओके, दैट जंक्शन, ओके, और आई कैन सिंपली से इट एंड्स एट द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ओके, और उसमें से भी द पार्ट इट इज द मेजर ड्यूडेनल पैपिले, ओके, मेजर ड्यूडेनल पैपिले. तो ऑब्वियसली बात है प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द ड्यूडेनम तो ये बना ही रहा है और डिस्टल हाफ ये बना रहा है, तो ऑब्वियसली बात है फोरगट और मिडगट के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज द ड्यूडेनम ओनली. तो ड्यूडेनम में कौन से पार्ट पे like the foregut ends, it is the
or we can just write it. Okay, I'll just write it over here. So remember guys, if this is the foregut, the midgut and the hindcut. So you should remember that it is like foregut and midgut, the junction, it is the major duodenal papillae. Major duodenal papillae. We will discuss about this when we will discuss the duodenum. No need to worry. Okay. Now, between the midcut and the hindcut, you already know it is the junction between the right 2/3 and left 1/3 of transverse colon. It is the junction between the right 2/3 and left 1/3 of the transverse colon. Okay, it is the junction between the right 2/3 and the left 1/3 of the transverse colon. This I have already discussed you right now कि ये जो colon वाला जो part है ना, so right 2/3 basically it is derived from, yeah, the right 2/3 it is derived from the midgut and the left 1/3 it is derived from the hindgut. So I hope this part is clear up till now. I hope this part is clear up till now. Just give me a thumbs up that if you are like clear with the concept, right? चलिए फटाफट से thumbs up दे दीजिए so that I have an idea that you guys have like understood the basics, and then I will start with the, yeah, then I will start with the development of the esophagus. Yes, then I'll start with the development of the esophagus. Yes. Chal. I'm just waiting for your thumbs up in the chat box. Yes, Garima, Anushka, Dimple, Nitika, Fun Mode, Aditya, Rutuja, Tanvi, Jinal, Nikinder, very good. Very good, guys. Chal. Very good. Chal. Let's just start with it now. Now, guys, this is something which I wanted to show you, the sagittal section, guys, right? This is one of the pictures given in the book, and that is what I have replicated on the screen as well. Nothing new. This is the same picture I have just replicated on the screen in a very layman's, what do I say, a simple line diagram actually. So, yes, you already know we have the dorsal iota. Okay, this dorsal iota is there. Okay, and it is supplying to the upper part that you already know, the celiac trunk. Okay, the celiac trunk. Over here we have the superior mesenteric artery, और नीचे अगर चले जाएंगे तो it will come as the inferior mesenteric artery वाला part. ठीक है, चल ये I hope this is clear to everyone. Yes. चल, तो ये एक पिक्चर थी जो मैंने दिखाने की कोशिश की आप लोगों को. So now I will start with the development of the esophagus. I will start with the development of the esophagus. Sure. Now, now guys, before coming to this particular diagram, let us first understand diagrammatically what is happening. पहले हम खुद का डायग्राम बनाएंगे और फिर जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे. First we'll understand our own diagram and then we will understand it from the book, right? Now, you guys are very well aware that this is the foregut. I'm just taking foregut in detail right now. Okay, first I'll discuss the development of the esophagus. So you already know that it is a tube-like structure, right? So this is a tube-like structure. Now, this foregut, now when I say foregut, you already know I'm talking about this particular structure. This is the foregut. And foregut is a tube-like structure, right? Right? And this foregut has two ends. ऊपर वाला end क्या हो जाएगा? Cranial end towards the head वाला part.
और नीचे वाला जो end हो जाएगा that will be the caudal end. And towards the caudal end of this particular structure, there will be a fusiform dilatation. There will be a fusiform dilatation in this tube, and yes, this fusiform dilatation towards the caudal end, fusiform dilatation towards the caudal end will form the stomach in the future. So we will discuss the embryology of the stomach also. So it is all deriving, it is all coming from the foregut tube, right? And the remaining part of the caudal end will actually is the part from where the duodenum will come. Or if I say duodenum, it clearly indicates the proximal part of the duodenum. The proximal part of the duodenum. Now, intentionally, guys, I have left a space over there. Okay, I have left a space towards the cranial end. Okay, so this is all the foregut tube. Okay, so foregut tube towards the cranial end, guys, there will be a you can say a diverticula, or you can say a, another tube-like structure. Okay, will come from this foregut tube, and remember that this particular structure, it is called as the laryngeotracheal tube. Okay, this particular structure, it is called as the laryngeotracheal tube. So obviously, this is the tube that is coming from this projection. Okay, diverticula that is coming from this particular structure, and in future it will form the trachea. Right now, this tube will grow in size, okay, and will later on give buds, and these are called as the respiratory buds through which the lungs will arise. Okay, so we have the respiratory buds. Okay, we have the respiratory buds over here, and this is coming from this laryngeotracheal tube, and this is later on will convert into the functional lungs, right? Now, guys, this cranial part of the esophagus, the cranial part, I mean, the part which is like just above the stomach wala jo part hai, this part of the esophagus, okay, I mean, the part of the foregut will get converted into a structure, and that structure, it is called as the esophagus now. It is called as the esophagus. It is the future esophagus, right? So now, what is happening, guys? What is happening over here? That you all are aware that this is the tracheal part, right? The tracheal part, okay? And this foregut will later on develop into the esophagus, okay? इतना clear है सब लोगों को? इतना clear है which part is forming which part? Which part is forming which part? Okay. Now, if you just want to write something over here, okay, I'll just draw a flow chart now. Not to worry, because I usually in the theory exams, this is an important question. So remember, guys, division of the cranial part, division of the cranial part of the foregut. I think it's clear, everyone. Division of the cranial part of the foregut. Okay, what it will give rise to? Okay, immediately caudal to the primitive pharynx. Okay. So it will give rise to the trachea, okay, trachea, and esophagus. I'm just drawing a structure like this. Ki trachea will come in front and esophagus will come like posteriorly. So obviously बात है. So division इस तरीके से है कि the trachea is going in front और esophagus का है पीछे है. So remember, the trachea is in anterior part.
and the esophagus, it is in posterior part. Now initially the esophagus is short. Esophagus is short. Okay, esophagus is short. Now you already know we have the respiratory buds over here. Okay, we have the respiratory buds over here, and over here, remember guys, over here we have the pericardial cavity in which the heart is developing. So basically we have the pericardial cavity. We have the pericardial cavity in which the heart is developing. So we'll learn about this. Yeah, we have the pericardial cavity in which the heart is developing. Okay, so initially the length of the esophagus is very much short. Okay, now due to the growth, okay, now respiratory buds will form the lungs and we have the heart. Okay, so as soon as the heart and lungs will go down, similarly the esophagus will also go down along with them, right? Now remember guys, due to, you have to complete the flow chart. Yeah, due to the growth and descent of the heart and lungs, descent of the heart and the lungs, it elongates. It elongates. Okay. Now, now guys, remember that inside this tube, basically what we have the epithelium cells, right? We have the epithelium inside this particular tube. जो esophagus बना हुआ है बेटा. अब esophagus में हमें क्या चाहिए होता है? Lumen चाहिए ना? So initially, the proliferation of this tube, it is by the epithelial cells, okay, and later on, these epithelial cells die. उसको हम लोग बोलते हैं apoptosis when the cells die, और उसको process को नाम देते हैं recanalization. We give the process a name that is called as the recanalization. Okay, and that's why how the canal, I mean the canal is created, right? How the canal is created, right? So I hope this particular structure is clear to everyone. I hope everything is clear right now, guys. So initially the internal part is actually obliterated by the epithelial cells, and later on वो epithelial cells will undergo apoptosis और उसकी वजह से वो space create हो जाएगा, and that is how the esophagus is formed. Right? I hope this is clear to everyone. चलो chat box में जवाब दे दो so that I just look at this and becomes way easy for me to just. चलो ठीक है, तो ट्रेकिया, लंग्स, एवरीथिंग, ऋतुजा, अनुष्का, ओके, जीनल, तनुप्रिया. अब बेटा अगर एम्ब्रियोलॉजी आ गई है तो अब बहुत इजी हो जाएगा. अब आप लोगों को ये क्लियर करना कि क्या कहते हैं, इसके डिजीजेस पढ़ने बहुत इजी हो जाएंगे. ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट ऑफ द इसोफेगस देख लिया. देखो ये या so you are already aware of the facts, right? चलो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. ना तो ये वाली चीजें क्लियर हो गई है. ट्रेकियो इसोफेशियल ब्रिज है, रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम बनेगा आगे, इसको डाइवर्टिकुलम बोलते हैं बेटा जो, और लंग बड्स बनेंगे ये, और ट्रेकिया बनेगा. आई होप दिस पिक्चर इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन. ये जो पीछे चला जाता है पोस्टीरियर साइड पे, दैट इज द इसोफेगस वाला पार्ट. ठीक है, और आगे जो है मैंने थोड़ा सेंट्रल सेक्शन दिखाया, देखो एंड ऑफ द थर्ड वीक पे ये स्टार्ट होता है, राइट? और फोर्थ वीक तक आते आते दे ऑल गेट सेपरेट, राइट? तो एक तो हमारा ऑब्वियसली बात है आगे की तरफ ट्रेकिया और लंग्स बन जाएगा, और पीछे क्या हो जाएगा, या यस, पीछे क्या हो जाएगा, यस. अब इसमें यस, चल ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, इन दोनों के बीच में, रिमेंबर गाइस, इन दोनों के बीच में देयर इज अ सेप्टम विच इज प्रेजेंट.
Now there is a septum which is present between the esophagus and this trachea. इस septum को हम लोग नाम देते हैं, it is called as the tracheo-esophageal septum. ट्रेकियो सेप्टम जो उस डायग्राम में अभी दिखाया हुआ था. तो अब ट्रेकियो इसोफेजियल सेप्टम जो होता है बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉर्डल एंड. अगेन गाइस रिमेंबर द डायरेक्शन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉर्डल एंड and it moves towards the cranial end. It starts from the caudal end and it moves towards the cranial end. It starts from the caudal end and it moves towards the cranial end. Okay, and automatically क्या हो जाता है basically this septum will actually close the connection between these two. But what happens if, guys, if the connection is not closed? Okay, if the connection is not closed, what will happen? If it is running in opposite direction, कि ऊपर से start हुआ है and it is coming down, craniocaudal movement हो रहा है septum का, तो ऊपर वाला part तो कभी close ही नहीं होगा फिर. Okay, the upper part will never get closed, right? So this is something which is referred to as the congenital tracheoesophageal fistula and esophageal atresia. Now we will learn about this particular disease in detail, guys. अब इसमें क्या होता है कि now what is meant by a fistula? Anyone who will tell me what is meant by a fistula, guys? Right, I have just change the marker. Yeah, tell me what is a fistula, guys? Yes, what is a fistula, guys? फिस्टुला का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं. फिस्टुला का मतलब क्या होता है, देखो इसमें मजा आएगा थोड़ा पढ़ने में, इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज अ फिस्टुला, गाइस? एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, ठीक है, एबनॉर्मल ओपनिंग होती है विच इज नॉट रेलेवेंट. फिस्टुला, राइट, एबनॉर्मल ओपनिंग इज देयर एंड विच इज नॉट रेलेवेंट. नाउ there are several cases which can happen. Now in case 1, discussing one by one, if we take case 1, guys, what can happen that suppose this is the esophagus. Okay, now this is the esophagus, or I can just draw it like easy draw. Yes, now suppose this is the esophagus. And you already know that the lower part has fused and the upper part has not fused. Just a okay. So yes, there is an abnormal communication, guys, over here. Yes, abnormal connection or abnormal opening is there. So remember, guys, this is one of the reasons, guys, what can happen that the distal end, देखो अगर ये हम cranial end ले ले और ये अगर मैं distal end ले लूं, so the distal end communicates with the trachea, right? The distal end basically communicates with the trachea, and this is the most common congenital anomaly that you can encounter. Like we have various cases, right? So this is something which is called as the type C wala part. ठीक है, it is called as congenital tracheoesophageal fistula type C. Okay, type A and B I will draw. Why I have drawn type C? Because it is the most common, and in type C, remember the distal end communicates with trachea. अब ये normal तो है नहीं, तो ये abnormal ही है. It communicates with the trachea और ये normal नहीं है. It is an abnormal plate. ठीक है, earlier they should be like two different tubes, but septum transversum didn't work properly, and due to that basically there is an the distal end communicates with the trachea.
So that is the most common type, right? अपर वाला तो अलग हो गया, मैंने बताया ना, कॉर्डल क्रेनियल चलता है, नीचे से ऊपर इट क्लोजेस, बट फिर क्या हो रहा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इफ इट इज हैपनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन गाइस, तो ऊपर वाला तो अलग हो गया बट नीचे वाला अलग नहीं हो पाया, सो दैट इज द डिस्टल एंड कम्युनिकेट्स विद द ट्रेकिया, so that is the most common type, right? The most common type of congenital tracheoesophageal fistula. ठीक है, दूसरा केस देखो, तो ये टाइप सी है बेटा। अब ना टाइप सी, अब देखो, now if, now take the opposite part beta, if the proximal end communicates with the trachea, okay, if the proximal end of esophagus communicates with the trachea, okay, but distal end is blind ending, okay, distal end matlab it is blind ending, they have no communication with each other, तो ऊपर वाला अलग हो गया, मतलब नीचे वाला अलग हो गया, and proximal end is still communicating with the esophagus, right? So remember that it is called as the type B, type B congenital tracheoesophageal fistula, in which the proximal end of esophagus communicates with the trachea, okay, and is blind ending, and the distal end is, but distal end is blindly ending, okay, blind ending. So this is called as type B, type B, type B. ये दोनों केसेस क्लियर है आप लोगों को? और भी हैं, ओके। चलो एक केस और ले लेते हैं, एक केस और ले लेते हैं, आई होप दिस इज क्लियर, एक केस और ले लेते हैं। नाउ अब एक केस क्या हो सकता है बेटा कि वी हैव द प्रॉक्सिमल एंड, ओके, दैट इज कनेक्टिंग alone, yes Anushka, it's clear, okay, and right, we have, okay, let us just draw it very simple in a very so yes, so suppose this is the esophagus guys, right? This is the esophagus, this is the esophagus. Now we have the proximal end of the trachea, like it is communicating separately, and we have the distal end, it is also communicating separately, it is also communicating separately, it is also communicating separately. So proximal and distal end, they both are, it is called as type D congenital tracheoesophageal fistula, where the proximal and distal end both communicates with trachea, both communicates with trachea. So remember guys that this is the least common type, it is rarely seen, it is the least common type, okay, it is the least common type, it is rarely seen. Yes, again I'm coming to type E. Yes Monica, you said right, I have to just discuss it. Yes, type E. Now what is type E guys? That, yeah, the trachea has one single opening in the mid of the esophagus, okay, in the middle of the esophagus it has just one opening, okay, that is in the mid of the esophagus. And remember guys, suppose this is the trachea, this is the esophagus, it is resembling a letter H, ये देखो बिल्कुल H letter जैसा लिख रहा है ना, so it is called as type E वाला part, okay, the type E. So type E basically it resembles letter H, resembles letter H. अच्छा, अब मैंने आपको टाइप सी बताया, वेयर द डिस्टल एंड कम्युनिकेट्स, टाइप बी में क्या है, प्रॉक्सिमल एंड कम्युनिकेट करेगा, टाइप डी क्या है, दोनों एंड सेपरेटली कम्युनिकेट करते हैं, एंड टाइप ई में क्या है, वेयर बोथ द एंड्स लाइक कम्युनिकेट विद अ सिंगल ओपनिंग,
और अब टाइप ए आप लोगों को और ध्यान रखना है, टाइप ए व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन गाइस, व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन, when there is no communication, right? So we have this esophagus is blind entering and like, oh sorry, I've just mentioned it wrong. So esophagus and trachea, right? Esophagus is blind ending and it has no communication with the trachea, right? It has no communication with the trachea. That is the type A wala part. Type A wala part, right? Yes. Nishu, okay. Love from Al Farabi. Okay, beta. Why? Chalo. I hope this is clear to everyone. I hope this is clear to everyone. तो ये चीज यहाँ पे भी बताई हुई है. You can easily see that, right? You can easily see that in this picture as well, that the proximal end of the esophagus is not communicating, distal end of the esophagus is communicating. तो ये वाला बताओ ये कौन सा टाइप है? What is this type called as? Tell me, which type is this beta? जल्दी से बताओ, which type is this? ये जो पहली इमेज है, द फर्स्ट वन, टेल मी विच टाइप इज दिस. और इसोफेग ये जो ट्रेकिया है ना बेटा, थोड़ा सा वैसे बना लो, अदरवाइज यू गाइस विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? तो इसको दो बाइफिकेशन सिखा देना. यस, जल्दी से बताइए, विच टाइप इज द फर्स्ट वन, विच टाइप इज द सेकेंड वन? Yes, the distal part. Yeah, Anushka, very good. Fun mode, very good. It is the type C wala part. Type C, where the distal part of the esophagus communicates. It is the type C. Okay. Second one वाला कौन सा है? Second one वाला बता दो जल्दी से. Okay. Second one, which is this particular type, it is type A, जहाँ पे esophagus is actually constricted into a narrow pouch, right? अब इसमें कैनलाइजेशन नहीं हुई. अब मुझे बताओ, कैनलाइजेशन नहीं होगी तो ट्यूब तो बनेगा ही नहीं, ठीक है? तो एपिथेलियल सेल्स हैज टू डाई, तभी तो ट्यूब बनेगा बीच में से. तो जो एपिथेलियल सेल्स which were proliferating over here, they did not go apoptosis later on, so they are just acting blind, acting वो atretic होते हैं, ठीक है? These are atretic. There is no communication guys, okay, because their ends are like they didn't go recanalization and automatically, yeah, it is type A. टाइप ए, ठीक है. नेक्स्ट वाला बता दो जल्दी से, ये कौन सा टाइप है? विच टाइप इज दिस? विच टाइप इज दिस? थर्ड नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला और फिफ्थ नंबर वाला, जल्दी से कमेंट कर दो चैट बॉक्स में. जल्दी से कमेंट कर दो चैट बॉक्स में. यस, इट इज द टाइप ई. टाइप ई क्यों बोलेंगे बेटा? देखो लेटर एच बन रहा है ना, देखो ये कौन सा लेटर बन रहा है? दिस इज द लेटर एच, तो इट इज टाइप ई. इट इज टाइप ई. यस, इट इज टाइप ई. फिर फोर्थ वाला, या टाइप बी, हाँ सिंगल है, सिंगल है. हाँ अनुष्का तुमने सही आंसर दिया. फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? इट विल बी टाइप बी, बिकॉज द प्रॉक्सिमल एंड जो है, जो ऊपर, प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर होता है, डिस्टल नीचे वाला हो गया ना. सो या इट इज टाइप बी. और लास्ट में क्या आ जाएगा? टाइप, यस इट इज टाइप डी. ओके, प्रॉक्सिमल एंड अलग कम्युनिकेट कर रहा है, डिस्टल एंड अलग कम्युनिकेट कर रहा है, दोनों अगर एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इट इज टाइप ई. व्हेन दे आर कम्युनिकेटिंग सेपरेटली, इट इज कॉल्ड एज टाइप, yeah, it is called as type T, and it is the least common one. It is the least common one which occurs, and the most common one, it is the first one. The most common one, it is the first one. Yes, everyone is right. Chaitanya, very good beta. I hope everything is going good. चलो इतना समझ में आ गया सब लोगों को? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला क्लियर हो गया सब लोगों को? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, अब सर्जरी इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है. सो यस, फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि ये क्लियर हो गया हमें. So I will start with the surgery integration now. Now, guys, what you have to know about this particular disease? अब ये पता कैसे करो कि patient को what is the, जो child है, now the child, what are the symptoms that will know, what are the clinical features that will appear? Okay, now चलो इतना क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप दे देना सब लोग. So we are discussing.
The congenital, tracheo, esophageal fistula and esophageal atresia. Yeah. चलो, everyone has given thumbs up. Very good. Tanvi, Aditya, Garima, Ishita, Rutuja, Kriti, Nitika, Jinal, Anushka, Nikinder, Temple. Very good. Very good, guys. So we are just discussing this. Yeah. अब क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे बच्चे में? आप खुद मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स? बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? देखो, ट्रेकिया है, ट्रेकिया और इसोफेगस आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। एनी टाइप ले लो, कोई भी टाइप ले लो, क्लिनिकल फीचर्स सेम रहेंगे। तो कहने का मतलब है, ट्रेकिया से जो आगे लंग बड्स थे, जो लंग्स वगैरह बन रहे थे, तो व्हाट विल बी द चाइल्ड हैव? लंग्स में क्या दिक्कत हो जाएगी उसको? कफ हो जाएगा। एसोफेजियल एट्रेशिया। चलो, देखो नाउ, देखो बेटा, सर्जरी में लिखते कैसे हैं? सबसे पहले आपको CF लिखना होता है। ये मैं आज बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। इट इज कॉल्ड एज द क्लिनिकल फीचर्स जो हमें इस बच्चे में देखने को मिलेंगे। A newborn baby will have respiratory distress. The child will have respiratory distress. सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि सांस का पाथवे ब्लॉक हो चुका है ना, मतलब it is communicating with the esophagus. The child will have respiratory distress. अब दिमाग थोड़ा सा लगाओ बेटा कि अगर ये इसोफेगस वाला पार्ट है तो इसोफेगस में क्या है? सलाइवा। ऑब्वियसली बात है, सलाइवा इनगल्फ करता है बच्चा। अब मैं न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहा हूं। तो अब मुझे बात बताओ, अगर सलाइवा इनगल्फ करेगा, यहां तो एट्रेटिक है, मतलब यहां से सलाइवा नीचे तो नहीं जा सकता, सलाइवा कैन नॉट मूव डाउन। तो व्हाट विल हैपन? एक्सेसिव ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। अगर इसोफेगस पेटेंट नहीं है, अगर इसोफेगस इज नॉट हैविंग अ ट्यूब कनेक्टिंग, ट्यूब नहीं है नीचे तक के लिए, व्हाट विल हैपन? सलाइवा विल कम आउट। तो ये बच्चे में दिखाई देता है, देयर विल बी एक्सेसिव ड्रिबलिंग ऑफ द सलाइवा इफ esophagus is not patent. If esophagus is not patent, then we have excessive dribbling of saliva. Excessive dribbling of saliva. अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन, हाँ, न्यूमोनाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। चलो, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन घूम रहा है कि चलो, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जो ये इसोफेगस बन रहा है, ऑब्वियसली बात है, अगर एट्रेटिक होगा तो इनिशियली क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड फॉलो करता है ना, अगर ये प्रॉपर अच्छे से नहीं डेवलप हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन कि एमनियोटिक फ्लूइड जो स्टोमैटिडियम यानी कि बकोफेरेंजियल जो ओरल कैविटी में कन्वर्ट हुई है उसके थ्रू जाती है और एनाल कैनाल में निकलती है। तो इसी तरीके से सर्कल चलता रहता है। बट अगर इसोफेगस इज नॉट डेवलपिंग प्रॉपर्ली, तो व्हाट विल हैपन? एमनियोटिक फ्लूइड बाहर ही का बाहर रह जाएगा। एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा मदर में इवन ड्यूरिंग द डिलीवरी, और उसको पॉलीहाइड्रेमनियोस बोलते हैं, उसको पॉलीहाइड्रेमनियोस बोलते हैं, राइट? सो यस, नाउ गाइस, अब ऐसा बच्चा जो मेरे पास आया है which I can see that it is having respiratory distress और excessive dribbling of saliva देखने को मिल रहा है अगर esophagus patent नहीं है। ओके, सो नाउ गाइस, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? अपना अपना दिमाग लगा के बताओ, अपना अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ। ऐसा बच्चा जो आपके पास आया है which is having respiratory distress, ओके, अ न्यूबॉर्न बच्चा आया नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इट्स अ न्यूबॉर्न बेबी, राइट? तो tell me guys, what is the first thing that you will do with this particular thing, this case? Now guys, you will pass a nasogastric tube. Okay, will pass a nasogastric tube. Nasogastric tube. Nasogastric tube अगर वो पूरी की पूरी सीधी अंदर चली जाती है तो it clearly indicates that there is no congenital esophageal anomaly.
ओके, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। बट अगर इसी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब का कॉइलिंग हो जाए, इफ वी हैव द कॉइलिंग, यस, सर्जरी बेटा आते ही सर्जरी थोड़ी कर दोगी, पहले कंफर्म तो करोगी डायग्नोसिस। वी हैव द कॉइलिंग ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं बेटा उसको, ओके। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब विल बी द बेटर पार्ट, क्योंकि नोस नहीं हम लोग माउथ डाल रहे हैं, सो या सॉरी मैंने नेसोगैस्ट्रिक लिख दिया है, जस्ट राइट इट ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेसोगैस्ट्रिक भी होती है बट विल एक्चुअली गिव द ओरोगैस्ट्रिक, ओरल कैविटी से देंगे ना, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द कॉइलिंग ऑफ द ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, ओके, इट इज द कॉइलिंग ऑफ द ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। ऑब्वियसली बात है, तो वो ऑब्वियसली बात है, पूरा का पूरा अंदर तो जाएगा नहीं क्योंकि नीचे एट्रेटिक है। So that is the indication of fistula. It is the indicator of fistula या atresia. Okay. अब इसको मुझे कंफर्म करना है. So diagnosis is confirmed by, इससे मैंने अनुमान तो लगा लिया कि ये होगा, बट मुझे डायग्नोसिस कंफर्म करके बताना होगा. So it is confirmed by a contrast study, guys. It is confirmed by a contrast study, and the contrast that we use for this particular case, it is iohexol dye. All this you will learn later on also, so no need to worry. Okay, we have dinosil, one of the contrast mediums, and we have barium. So the most common that is used, it is iohexol dye, dinosil, and followed by barium. Okay, so yes. Apart from that, what you will look in the child, guys, apart from this, all these things, what you will look, okay, once the diagnosis has been confirmed, once diagnosis has been confirmed, diagnosis has been confirmed, once the diagnosis has been confirmed, we have to rule out other congenital anomalies, rule out other congenital anomalies. Okay, once the diagnosis has been confirmed, we have to rule out the other congenital anomalies. And the other congenital anomalies, what are they? You have to rule out, or you can just remember with the help of mnemonic, vectoral. Okay, now what does this vectoral stand for? V stands for the vertebral defects. Vertebral defects. Okay, anorectal malformations. Anorectal malformations. Okay, cardiac defects. Cardiac defects. Okay, it is the most common one, and if you ask me which cardiac defects, we have the ventricular defects. We have to look for all these things now. Ventricular defects, once the child is born with this particular congenital anomaly, it is the once the diagnosis has been confirmed, it's the duty of the doctor to rule out the other anomalies as well. Now, TE we have already discussed, it is the tracheoesophageal fistula. Tracheoesophageal fistula. Renal anomalies, and obviously defects in the limb defects. Limb defects. Is this clear to everyone? Now, is this clear to everyone? So I will discuss the management also. एक पेज में थोड़ा सा clinical feature diagnosis हो गया, और एक पेज में हम management कर लेते हैं इसका, तो it will be like, yes. बेटा अगर एक्सरे की बात करोगे तो एक्सरे पे ओके, मतलब आपको सिर्फ फंडल गैस बबल दिखाई देगी, ठीक है, सिर्फ सी इफ द इसोफेगस इज पेटेंट, ठीक है, अगर कोई ट्यूब में ओपनिंग ही नहीं है या फिर डिस्टल एंड कम्युनिकेट्स विद द ट्रेकिया, ये सिर्फ डिस्टल एंड वाले के लिए काम आएगा. So what will happen? The air will come into the stomach, and this is something which is called as the fundal gas bubble sign, right? So ये भी एक पॉइंट है जो हम सर्जरी में बताते हैं, ठीक है, but like only for the one which is
where the distal end communicates with the trachea and it's the most common type. तो मैनेजमेंट देखो इस पेशेंट के में क्या करोगे बताओ? सर्जरी करेंगे, ये बात तो गरिमा ने ठीक बोली है, बट सर्जरी करने के लिए मैनेजमेंट देखो क्या होगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज डन यूजिंग वाटरसन क्राइटेरिया। Management is done using the Watterson criteria. So we have to look for two things first, beta. Birth weight of the child. Birth weight of the child. Okay. If it is more than 2.5 kgs. अच्छा पहले ये तो बता दो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है बच्चे का? न्यू बॉर्न बेबी उसका एवरेज बर्थ वेट कितना होता है? मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इट इज हाउ मच? चलो ये बता दो। और दो चीजें देखनी होती कि निमोनिया है कि नहीं बच्चे को, निमोनिया प्रेजेंट है या नहीं। So if the birth weight of the child is more than 2.5 kgs, if the birth weight it is between 1.5 to 2.5 kgs, and the third category if it is less than 1.5 kgs. Yes, normal birth weight कितना होता है बेटा फटाफट से बताओ। पता है नहीं है? चल बेटा एवरेज बर्थ वेट यस 2.5 बेटा it is 2.8 kgs. We have to very like particular about the numbers over here. Yeah, so it is 2.8 kgs normal, like the average जो birth weight होता है ना like it of a newborn it is at approximately 2.8 kgs. You have to be very much clear. Range बोल सकते हो 2.5 to 4, but if I ask you a single number it is 2.8 kgs, right? If I have asked you a simple number it is like 2.5. चल अगर निमोनिया है, अगर निमोनिया प्रेजेंट है बच्चे में, निमोनिया ऑब्वियसली बात है लंग्स को इफेक्ट कर रहा है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रही है, ट्रेकिया से लंग्स में ही जा रहा है और द मोस्ट ऑफ द एयर इट इज गोइंग इनटू द इसोफेगस. सो what will happen? Pneumonia will occur, infection of the lungs will be there, right? So if there is no pneumonia, remember guys, you will do a definitive surgery. You will do a definitive surgery. और सर्जरी क्या होती है? I will tell you. सर्जरी में क्या करेंगे? I will tell you. अगर यहां पर है तो what you will give बेटा? अगर 1.5 2.5 kgs है प्लस माइनस, ओके प्लस माइनस. नाउ if the birth weight is low, okay, birth weight is low, so first you have to give the antibiotics. Okay, first you have to give the antibiotics, then you have to build up nutrition for some days. Build up nutrition for few days, okay, and then carry out surgery. ठीक है, then carry out surgery. लेस देन 1.5 kgs है और अगर निमोनिया है या नहीं है तो you have to give antibiotics to treat the infection and you have to do gastrostomy for nutrition. अब मुझे बताओ गैस्ट्रोस्टोमी क्या होती है? गैस्ट्रोस्टोमी क्या होती है फटाफट से बताओ. और यहाँ पे हम लोग डिलेड सर्जरी करते हैं क्योंकि बच्चे का वेट होना बहुत जरूरी है. What is gastrostomy guys? गैस्ट्रोस्टोमी टोमी का मतलब एक ही होता है, फटाफट से मुझे बता दो गैस्ट्रोस्टोमी का मतलब क्या होता है? चलो किसी को पता है तो बताओ. गैस्ट्रोस्टोमी बेटा क्या होता है कि हम लोग वी एक्चुअली डायरेक्ट इंसर्ट अ ट्यूब इनटू द स्टमक ऑफ द बेबी, राइट, और उससे हम लोग न्यूट्रिशन पास करते हैं.
यस ट्यूब इंसर्शन है, वेरी गुड फन मोड, वेरी गुड बेटा। सो ऑब्वियसली बात है कि तो ये तो है ही नहीं, तो पहले हमें न्यूट्रिशन देना पड़ेगा कुछ दिन के लिए एंड देन वी हैव टू कैरी आउट, राइट? नाउ ओके, how do the surgeries are carried out? I'll just add one more slide to it, or I can just use it over here. Okay. Now see guys, for example, you are very well aware that for, let us just see the case, how the surgery is done. For example, this is the trachea wala part, right? This is the trachea wala part. And this is the most common one, that is the type C, where the distal end of the esophagus communicates with the trachea, where the distal end communicates with the trachea. Yes, direct nutrition, insert tube in GIT, in direct nutrition abdomen to stomach दे देंगे, ठीक है? So first what we have to do is we have to actually cut this fistula. We have to cut the fistula. Okay, we have to cut the fistula. We have to repair the trachea. Repair the trachea. ट्रेकिया को रिपेयर करना है, बेसिकली वी यूज वन सूचर्स दैट इज कॉल्ड एज पॉलीडाइऑक्सोन सूचर्स. Okay, that is again a question, which sutures are used over here? That is polydiaxon sutures. हम suturing कर देंगे और ये जो पार्ट निकल के बाहर आएगा इसको और इसको anastomose कर देंगे, आपस में दोनों को मिला देंगे. So we have to, the first step is cut the fistula, second is repair the trachea. ट्रेकिया का जो वो स्पेस खाली रहेगा उसको सूचर्स लगा दो, और थर्ड वाला पार्ट जो ये ईसोफेगस का पार्ट निकाला है इसको ऊपर वाले ईसोफेगस से जोड़ दो. तो थर्ड वाला पार्ट वी आर डूइंग द anastomose, anastomose the esophagus, anastomose the esophagus, anastomose the esophagus, right? Now there are two questions that are being asked in the exam from this particular point, that what is the most common early complication of the surgery? What is the most common early complication of the surgery? That is leak. लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन late complication of the surgery? Late complication of the surgery, that is stricture and stricture. स्ट्रिक्चर, चलो फटाफट से बताओ स्ट्रिक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्चर एट द एनास्टमोसिंग साइट, एनास्टमोसिंग साइट. Stricture at the anastomosing site. So early complication, later on it will develop strictures. So yes. Yes. Constrictions. Okay. Now again बेटा, अगर यहाँ पे केस ले लो, देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाली सिचुएशन है. You already know that we have two ends of the esophagus. So the case number one, if the two ends of the esophagus are close to each other, okay, if they are close to each other, we anastomose them directly, ठीक है? But अब if now second case that I wanted to discuss with you, एक केस ये भी हो सकता है बेटा, case number 2. Yeah, yes. Case number 2, remember guys, if the two ends are apart, two ends are far, एक एंड बिल्कुल ऊपर है और एक एंड बिल्कुल नीचे है, नाउ यू कैन नॉट एनास्टमोस देम, उसको खींच के एनास्टमोस नहीं कर सकते आप लोग. तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इफ टू एंड्स आर फार देन यू हैव टू डू गेस्ट्रोटमी, गेस्ट्रोस्टमी,
okay, for nutrition, gastrostomy for nutrition, okay. And as the child grows and the two ends will come closer to each other, तो आप लोग क्या करोगे उसमें, फिर आप लोग एनास्टोमोस करोगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस जहां पे दोनों एंड्स इसोफेगस के दे आर फार सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, so you will wait for the child to grow, meanwhile you will do gastrostomy to build the nutrition for the child, and later on what you guys will do, you will anastomose it when the esophageal ends will come closer to each other, okay, when the esophageal ends will come closer to each other, right? Or, for example, if I just wanted to discuss in type A, especially in type A, guys. Now, if we talk about type A, there are some magnets we can put, okay, and we have high powered magnets we can put. That is actually these are called as what we say flourish device, okay. Flourish device, basically these are high powered magnets which are put at both the ends so that they attract with each other and the growth is going to be faster, okay. So for type A especially, beta, if you just wanted to like mention, we use high powered magnets, high powered magnets, and you already know these are called as the flourish devices, okay, the flourish devices. And remember, these powered magnets we put it at both ends so that they attract with each other and the growth is going to be faster, so that they attract with each other and the growth is going to be faster. Is it clear to everyone? If we talk about B, C, D, E, we carry out Cameron height surgery. Type B, C, D, E, जो भी मैंने आप लोग को बताया था, okay, the one which we have discussed right now, okay, the one which we have just discussed right now, yeah. So this surgery is for type, okay. आदित्य, फन मोड, करीमा, बाकी सब जिंदा है क्लास में, रिप्लाई भी कर दिया करो भैया। निकिता, वेरी गुड, नितिका। So yes, this for type B, C, D, E, we do this particular surgery, and that is the Cameron height surgery. Cameron height surgery, just given a name, you just don't have to perform the surgery, you have to just learn. Okay, Cameron height surgery is the name for this particular thing. I hope this is clear to everyone. This was in a very layman's language what I've discussed with you today. Yeah, so let us start with the next topic, that is the mesentery and development of stomach and important gastrointestinal ligament. तो ईसोफेगस वाले पार्ट से बेटा एट्रेशिया आप लोग को समझ में आना चाहिए। एट्रेशिया का मतलब है कि वो ट्यूब ओपन नहीं है, नीचे से वो क्लोज्ड है, ठीक है, एंड्स पे क्लोज्ड है एट्रेशिया। और फिस्टुला एबनॉर्मल ओपनिंग, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, उसका मैनेजमेंट समझ में आना चाहिए, हाउ टू ट्रीट द patient, okay. So that things you should actually know, okay. So let us now start with the mesentery part. Let us now start with the mesentery part, beta. तो चल, अनुष्का, आदित्य, तन्वी, बेटा क्लिनिकल कोरिलेशन साथ साथ पढ़ा दूंगा जो भी डिजीजेज है, ताकि तुम लोगों को अभी के अभी क्लियर हो जाए कि जब देखो अभी पढ़ रहे हो, अभी नोट्स भी बना लोगे, फिर एक बार और सर्जरी पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जनरल डेवलपमेंट पता होता है ना बेटा, तो उसकी एनोमली भी समझ में आती है। सर्जरी वाले थोड़ी बताएंगे कि इसोफेगस कैसे डेवलप हो रहा है, दे विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द कंजेनाइटल एनोमलीज। एंड तो इसी को बोलते हैं कंसेप्ट बिल्ड करना, कि हमने पहले देखा कि वो कैसे बन रहा है, और अगर वो सेप्टम फ्यूज नहीं होता है और अगर गलत तरीके से फ्यूज होता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्यूज होता है, तो इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एबनॉर्मल ओपनिंग कॉल्ड एज द फिस्टुला, राइट। So that is why I always emphasize on the fact that you have to be like crystal clear in the concept wala part, right? Sure. Now, सबसे पहली बात, ये जो क्लास में भी बहुत बार पूछा जाता था कि मिसेंट्री क्या होती है, मिसेंट्री क्या होती है।
So remember guys, it is the mesoderm suspending the entire gut, suspending the entire gut within the body of the embryo, within the body of the embryo. ओके, विद इन द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो. नाउ चलो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं. ठीक है, कि अब इसका मिसेंट्री क्या होती है, डॉर्सल मिसेंट्री, वेंट्रल मिसेंट्री, पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल, सब बहुत कंफ्यूज करता है ना. तो इसको अभी एक पिक्चर में अभी हम लोग क्लियर करते हैं. तो पहले मैं बनाता हूँ पिक्चर, देखो. पिक्चर्स बनाते रहो साथ साथ. मैंने हमेशा बोला डायग्राम्स आर वे एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट्स इन अ इजी मैनर गाइस. ओके, सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम्स विद मी. So you all are aware that we have two walls over here, right? We have two walls over here. कौन कौन सी दो वॉल्स होंगी एम्ब्रियो की? एक तो बेटा हो जाएगी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और पीछे वाली का नाम क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. चलो इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं क्या है. अब इसी में आप लोगों को पता है वी हैव द डेवलपिंग स्टमक, राइट? वी हैव द डेवलपिंग स्टमक. इसी वॉल में डेवलपिंग स्टमक. स्टमक के नीचे क्या आ जाएगा? ड्यूडनम फर्स्ट पार्ट, फिर पूरा का पूरा ड्यूडनम, और फिर आगे जाके वो हाइंडवर्ट वाले पार्ट में चला जाएगा, राइट? समथिंग इज लाइक दिस, राइट? सो वी आर वेरी मच अवेयर कि स्टमक ही ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है? स्टमक इज सराउंडेड बाय द मेसोडर्म ऑन ऑल द साइड्स, राइट? ठीक है. अब आपको पता है ना कि स्टमक किसका बना हुआ है? स्टमक इज फ्रॉम विच पर्टिकुलर लेयर, विच जर्म लेयर? स्टमक किस जर्म लेयर का बना हुआ है? पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लो. अगर मैं पूछूं स्टमक इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर, जल्दी बताओ. स्टमक इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच जर्म लेयर? चलो इसका आंसर दो फटाफट. आई एम जस्ट ड्रिंकिंग वाटर. अनुष्का, यस, एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्म. ऑब्वियसली बात है, योग सैक का बना हुआ है. योग सैक जो है वही गट में कन्वर्ट हो रही थी, और फोरगट से स्टमक बन रहा है, और योग सैक हमें पता था एंडोडर्म. ठीक है, ठीक है. तो अब तुम्हें पता है कि जैसे ही फोल्डिंग हुई, एमनियोटिक कैविटी आई, तो उसके साथ साथ वी हैव द मेसोडर्म कमिंग देयर. ओके. अब one mesogas one mesoderm will actually attach the stomach to the anterior abdominal wall. Okay, it attaches the stomach to the anterior abdominal wall and also small part of the duodenum. ठीक है. अब एंटीरियर की तरफ है, और मैंने बताया एम्ब्रियोलॉजी में टर्म यूज करते हैं वेंट्रल. वेंट्रल का मतलब क्या होता है? एंटीरियर. वेंट्रल का मतलब क्या होता है? एंटीरियर. सो वी हैव द वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम, वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम. तो stomach is connected to the anterior abdominal wall also initially, and posterior abdominal wall also, right? So stomach is connected to the posterior abdominal wall. Okay, it is connected to the posterior abdominal wall, and remember that it is called as the dorsal mesogastrium, dorsal mesogastrium. Okay, now only stomach and a small part of duodenum has ventral mesogastrium.
रेस्ट इंटायर गट ट्यूब में कोई वेंट्रल मिसेंट्री नहीं होती। वेंट्रल मिसेंट्री बोल रहा हूँ, मीसोगैस्ट्रियम बोल रहा हूँ, वन ऑफ द सेम थिंग्स। ठीक है, इसको मीसोगैस्ट्रियम बोला है मैंने just because it is connecting the stomach to the anterior abdominal wall and it is connecting the stomach to the dorsal. Okay, now in the ventral mesogastrium, guys, okay, in the ventral mesogastrium, with the help of the septum transversum and the foregut tube, what will happen? A structure will develop, a structure will start to develop, and this structure, it is called as the liver. Okay, in the ventral mesogastrium, a structure will start to develop, and that is called as the liver. Liver, right? And in the dorsal mesogastrium, there is another structure which will develop over here, and this structure it is called as the spleen. This structure it is called as the spleen. चलो, अब इसमें मैं तुम्हें yes, हाँ, anterior to foregut है Loci, okay, whosoever it is. अब इसमें हम थोड़े से लिगामेंट्स याद करते हैं बेटा। लिगामेंट्स के नाम थोड़े थोड़े हम लोग यहाँ से याद करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ चलो, अब तुम खुद मुझे बताओ, द लिवर part of the ventral mesogastrium only, okay, the part of the ventral mesogastrium, okay, which is connecting the liver, okay, to the anterior abdominal wall, which is connecting the liver to the anterior abdominal wall. This ligament, it is called as the falciform ligament, falciform ligament, और इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब we have another ligament also developing, it is also called as the coronal ligament. Okay, the falciform ligament of the liver and the coronal ligament, it helps to connect the liver to the anterior abdominal wall, to the anterior abdominal wall, right? Now tell me the name of the ligament which will help in, which is a part of the ventral mesogastrium only. Ventral mesogastrium का ही part है, ventral mesogastrium का वो part, the anterior part which is connecting the liver to the anterior abdominal wall. Now ventral mesogastrium का this part which helps in connection of the stomach, which helps in connection of the stomach to the liver. What will be the name of the ligament, guys? Can you tell me the name of the ligament? Hepatogastric ligament. Hepatogastric ligament. Right, hepatogastric ligament. Right. Now, in the dorsal mesogastrium, the ligament which helps in the connection of spleen to the stomach, that is called as the gastrosplenic ligament. Gastrosplenic ligament. Okay, gastrosplenic ligament. And there is an organ in the posterior abdominal wall, guys, and that is called as the kidney. That is called as the kidney. And the ligament which is connecting the spleen to the kidney, the ligament which is connecting the spleen to the kidney, that will be the ligament which is called as the splenorenal ligament. Splenorenal ligament. Okay, it is also called as the linorenal ligament. Renal ligament. Okay, and the rest which is connecting to the posterior abdominal wall, the rest, dorsal mesogastrium,
connecting to the posterior abdominal wall, it is called as the greater omentum. It is called as the greater omentum. It is called as the greater omentum. तो ये क्या पिक्चर क्लियर है सब लोगों को? ग्रेटर ओमेंटम. सो इज दिस पिक्चर क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से एक थम्स अप देके बताओ जल्दी से इफ दिस पिक्चर इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट. यस. तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लिगामेंट, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट पीजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डॉलर मार्क कर लो. एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इसी को आई जस्ट वांटेड टू, अब इसी में मैं क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं. चलो इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं और इस क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखते हैं. अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेकिंग अ क्रॉस सेक्शन. अब मैं इसको इस तरीके से कट करूंगा और मैं पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आप लोग को दिखाऊंगा. ठीक है, क्रॉस सेक्शन में और अच्छे से क्लियर होगा. क्रॉस सेक्शन में रोटेशन भी समझ में आएगी स्टमक की, तो इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन देखना बहुत जरूरी है. ठीक है, और ठीक है, ग्रेटर मोमेंटम आगे हो गया. तो आगे का मैं बताना भूल गया, तो आगे का बचा हुआ जो क्या कहते हैं मिसेंट्री है विच विल अटैच इट स्टमक डायरेक्टली टू द वेंट्रल पार्ट, इट विल बी विच ओमेंटम गाइस? इट विल बी विच ओमेंटम? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, इट विल बी विच ओमेंटम गाइस? चलो लेसर ओमेंटम. ठीक है, चलो चलो ये पिक्चर क्लियर हो गई है. तो इसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए, क्रॉस सेक्शन लिया जाए. चलो अब you already know we have stomach. बीच पे क्या है? स्टमक है. ठीक है, तो ये मैं मार्क यहां कर लेता हूं, स्टमक. We have the stomach over here, right? Now this stomach is connected to the anterior abdominal wall. Okay, this is the anterior abdominal wall ले लेते हैं. And this stomach, it is connected to the posterior abdominal wall. Okay, it is connected to the posterior abdominal wall. So it is suspended from the mesentery on both the sides, guys. आगे भी कनेक्ट कर रहा है मीसोडर्म से, पूरा का पूरा सराउंडेड है स्टमक. The stomach is surrounded by the mesoderm, posterior abdominal wall, right? कभी कभार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी दिया जाता है, अभी मैं उसमें भी दिखाऊंगा तुम्हें. नाउ व्हाट हैपेंस कि इस वाले मीसोगैस्ट्रियम को हम लोग नाम देते हैं वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम. वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम. और इस वाले मीसोगैस्ट्रियम को नाम देंगे डॉर्सल मीसोगैस्ट्रियम. डॉर्सल मीसोगैस्ट्रियम, right? Now in the ventral mesogastrium, I've already told that a structure is developing. Okay, and that structure, it is called as liver. So in the ventral mesogastrium, you will see liver developing. So we have this particular liver. So liver is attached to, okay, so the liver is attached to the anterior abdominal wall, okay, with the help of ligament, that is the falciform ligaments and the coronal ligaments. Falciform ligaments, okay. All these ligaments will develop in the ventral mesogastrium only. All these ligaments will develop in the ventral mesogastrium. And between the liver and the stomach, we have which ligament, guys? That is the hepatogastric ligament. Hepatogastric ligament. Now, in the dorsal mesogastrium, guys, remember what is developing?
spleen, and for example, this is the left side and the right side. So on the left border, okay, on the left part, right, okay, so the spleen is developing. Spleen is developing. Dorsal mesogastrium ही है, but it's on the left wala part, okay. So remember, you are very well aware that the ligament which will connect the stomach to the spleen, okay, the ligament which will connect the stomach to the spleen, which ligament it will be, guys? Which ligament it will be? Tell me. Yes, it is the gastrosplenic ligament. It is the gastrosplenic ligament. Gastrosplenic ligament, right? Gastrosplenic ligament. इतना क्लियर है सब लोगों को? फटाफट से एक थम्स अप दे दो, राइट? Ventral part में you already know the stomach is also connected to the ventral क्या dorsal mesogastrium में the ventral aspect, it is connected to the posterior abdominal wall, and yes, you already know that over here this will be the greater omentum. Yes, yes, I have not drawn the kidney over here. If you want, you can just draw on the posterior abdominal wall. We have the kidney also, and the ligament connecting the spleen to the kidney, it will be the lino-renal ligament, or yeah, sorry, okay. Lino-renal ligament, or yeah, you can just write it another name as well. It is spleno-renal ligament, right? I'll just have the space. Spleno-renal ligament. Okay. So the dorsal part will have the lesser omentum also. I mean the ventral gastrium में जो ये जो dorsal part होगा ना, the part which is just behind the liver, okay. So what it will connect? It will connect the stomach, okay, to okay. So I just wanted to mention over here the one which is connecting the liver to the duodenum. You can see now, guys, over here. The one which is connecting the liver to the duodenum, small part of the duodenum, it is called as the lesser omentum, beta. It is called as it's part of the lesser omentum. It is the part of the lesser omentum. Right? It's a part of the lesser omentum. I hope this is clear to everyone. बेटा जल्दी से एक thumbs up दे दो if this is clear to everyone. So yes. If you want, we can write it also. If you want, we can write it. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. Perfect. Perfect, guys. I hope it's clear to everyone. So if I just wanted to know, like show you now what, just make it right, guys. So we have the ventral mesogastrium. Ventral mesogastrium. Then we have the dorsal mesogastrium. Okay. Dorsal mesogastrium. तो यू आर अवेयर कि वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम में भी दो पार्ट्स है बेटा. एक पार्ट लिवर से आगे, तो इसको मैं एंटीरियर पार्ट बोल सकता हूँ, और एक पार्ट लिवर से पीछे, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर पार्ट. ओके, है तो वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम का ही, बट वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम में भी वी हैव द एंटीरियर पार्ट एंड वी हैव द पोस्टीरियर पार्ट. So ventral mesogastrium, we have the anterior part and we have the posterior part. So in the anterior part, beta, you already know we have the falciform ligament and the coronal ligaments. The falciform ligaments, okay. And in the posterior part, beta, remember we have the lesser omentum, right? The lesser omentum, and in the lesser omentum, you already know we have the hepatogastric ligament, one connecting the liver to the stomach, hepatogastric ligament, and one connecting the
Liver to the duodenum, that is the hepatoduodenal ligament. Hepatoduodenal ligament, it's just a part of the lesser omentum. Majorly it is this. Then dorsal mesogastrium, guys. We have the anterior part of the dorsal mesogastrium and we have the posterior part of the dorsal mesogastrium. तो you already know कि ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो एंटीरियर है, स्प्लीन से आगे वाला, स्प्लीन से पीछे वाला क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर. डॉर्सल मीसोगैस्ट्रियम ही है, बट स्प्लीन से स्टमक तक एंटीरियर ले लेंगे और स्प्लीन से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तक पोस्टीरियर ले लेंगे. So the anterior part of the dorsal mesogastrium, it will give rise to greater omentum. Okay, the greater omentum. Okay, we have the gastrosplenic ligament over here. Gastrosplenic ligament. Okay, dorsal part or the posterior part will have the linorenal ligament, or it is also called as the splenorenal ligament, right? Linorenal ligament, also called as the splenorenal ligament. Splenorenal ligament. Now, over here, guys, I want to make one more thing, guys. There is one particular structure that I've just not mentioned. I'm just mentioning it right now. That is called as the diaphragm. Diaphragm. And one ligament will connect the stomach to the diaphragm in the dorsal mesogastrium. In the dorsal mesogastrium. And this is called as the diaphragm wala part hai. So it will be the gastrophrenic ligament. Gastrophrenic ligament. It will be called as the gastrophrenic ligament. Okay, so you just have to mention dorsal mesogastrium mein we have the greater omentum gastrosplenic ligament and we have the gastrophrenic ligament which helps in the connection of the stomach to the diaphragm. Gastrophrenic ligament. Gastrophrenic ligament. So I hope this is clear to each one of you guys. So just give me a thumbs up in the chat box that this particular lecture that I have discussed today, the important gastrorenal ligaments, okay, the mesentery, development of the stomach. I will be discussing the rotation tomorrow. Okay, I'll be discussing the rotation tomorrow. So just give me a thumbs up that all the clinical correlations that I've discussed with you, everything is clear to everyone today, right? Everything is clear to everyone. Yes. You can all see these ligaments, okay? Yes, in this particular picture. Yes. So, yes, everyone is saying yes. So, okay, perfect. Perfect, Tanvi, Aditya, perfect. Mikinder, perfect. Nitika, perfect. So, yeah. So I hope that there is no doubt as such now. Chalo. Let's end the class today over here and we'll just continue from where we left today. And what time you guys want, like in the evening or in the morning? Just comment your suitable timings. So at what time you guys want? Yeah, class. Okay, okay. Morning, morning. Fun mode says morning. Tanvi says morning. What about rest, guys? कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी दो ताकि मैं बेइज्जती बेइज्जती करूं तुम लोग की. ओके बेटा, थैंक यू. मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग. सब मॉर्निंग वाले हैं भैया. कोई निशाचर नहीं है, रात में पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, सब दिन में पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे पास. चलो ठीक है, देखते हैं. मॉर्निंग मॉर्निंग करवा लेते हैं क्योंकि अभी तो मैं भी देख रहा हूँ नंबर्स कम हो जाते हैं स्टूडेंट्स के ना इवनिंग में. और वैसे भी आधे पढ़ते हैं आधे नहीं पढ़ते हैं. So I hope all the concepts, all the diagrams that we have drawn, the clinical correlations, everything is clear. So ठीक है, we'll continue tomorrow with the development of the stomach, right? So yeah, goodbye, goodbye. चलिए बाय करते हैं.
चलो गुड बाय गाइस, थैंक यू। या अराउंड 10:30 तो मैंने आदत बना ही दी है तुम लोगों की पढ़ने की। चल, I'll stick to it, I'll see to it. If no changes are there, we'll continue in the morning. Bye, goodbye.